Unmute. Un- ओके, नमस्कार। मैं संतोष कुमार दास यहाँ उपस्थित सभी लोगों का IHM मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया है। यह भारत की सामाजिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विविधताओं का त्यौहार है। इसी क्रम में IHM मुंबई ने इसमें सहभागिता करते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कोरोना काल में कॉलेज के अचानक बंद हो जाने के कारण छात्रों का भाग लेना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे साथियों और स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसी क्रम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले प्रस्तुत है मराठी पोवाड़ा, जो हमारे तृतीय वर्ष के छात्र मोहम्मद साद सर्राफ ने गाया है। पोवाड़ा वीरों की गाथाओं का वर्णन होता है। महाराजांची, शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती. महाराजांची कीर्ती बेफाम, भाला भाला लपुटला गाम. याला कोण घेलिले सेने, दरबारी पुस्ती बेगम. बडी बेगम म्हणजे अली आदिल शहाची आई बरका. नजरेत त्याच्या अंगार दरबार झाला गपगार. कोणी घेईना पुढाकार, साऱ्यांनीच मानली हार. इतक्यात एक सरदार उठलं, बोला, हम लाएंगे शिवाजी को. कौतिक झाले दरबारात, खान निघाले मोठे घुरमीत. त्याचं घोडदळ पायदळ, फौज फाटालई बक्कळ. अंगी 10 हत्तीचं बळ, पाहणारा कापे छळछळ. वाटेत भेटले त्याला चिरडीत, तेचित खानात सेना निघाली. गाव लुटली, देऊळ उद्ध्वस्त केली. आया भानीची आबरू लुटली. कोण कोण रोखणार हे वादळ. आता शिवबाज काही खर नाही. इकडं निजाम, तिकडं मोगल, पलीकडे इंग्रज. राजाची सेना मुठभर, खानाला कसा ठोपणार. काय लढवला हुनर, चिंतेत पण सरदार. अशा वाघिणीचा तो छावा, अशा वाघिण्याचा तो छावा. गाणी माला कसा ठेचावा, डोक्यात गाणी मी कावा. भेटीचा धाडला संगावा. प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा संगावा. खानना हसत हसत कबूल केला. दिवस ठरला आणि ठरला प्रमाण. प्रतापगडच्या पायथ्याची खान, प्रतापगडच्या पायथ्याची खान.
प्रतापगडच्या पायथ्याची खान, प्रतापगडच्या पायथ्याची खान, आला बेगुमान नाही त्याला जाण. शिवाजी राजांच्या करामतीची, शिवाजी राजांच्या करामतीची, अन त्याच नाही न जाण शक्तीची, अन त्याच न जाणीव शक्तीची. अन करेल काय कल्पना युक्तीची, हजी जी जी, अन करेल काय कल्पना युक्तीची, हजी जी जी. खानाच्या भेटीसाठी महाराजांनी एक शानदार शामियाना उभारला होता. भेटीसाठी छान उभारिला, भेटीसाठी छान उभारिला, नक्षीदार शामियानाला, नक्षीदार शामियानाला. अन अशा ह्या शामियानात खान डौलत डुलत आला, खान डौलत डुलत आला. सय्यद बंद त्याच संगतीला, सय्यद बंद त्याच संगतीला. शिवबाच्या संगती महला, शिवबाच्या संगती महला. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ. खान हाक मारितो हसरी, खान हाक मारितो हसरी, रोखून नजर गहरी. खानान राजाला आलिंगन दिला अन दगा केला. खान दाभिमानी मानला, खान दाभिमानी मानला. कट्याऱ्याची वार त्यानं केला, कट्यारीच्या वार त्यानं केला. घर खरा आवाज झाला, घर खरा आवाज झाला. चिल्लाकत व्यत अंगाला, चिल्लाकत व्यत अंगाला. खानाचा वार फुका गेला, खान यडबडला. इतक्यात महाराजांनी पोटामध्ये बिछवा ढकलला, पोटामध्ये बिछवा ढकलला. वाघ नखांचा मार केला, वाघ नखांचा मार केला. टरा टरा फाडला पोटाला, तडा गेला खानाचा कोटला. बाहेर आला जीर जी जी, बाहेर आला जीर जी जी, बाहेर आला जीर जी जी. धन्यवाद साध। यह प्रयास इसलिए भी काफ़ी सराहनीय है क्योंकि मराठी साध की मातृभाषा नहीं है। तो जस्ट उसने ये प्रयास किया, वही एक बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं। अब शेफ स्नेहा महाजन जोगलेकर महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी नाना साहेब पाटिल के जीवन और का वर्णन करे और उनकी महानता का वर्णन करेगी। Hello, ladies and gentlemen. Wishing everyone a very happy Republic Day. Azadi Ka Amrit Mahotsav is earmarked for honoring our freedom fighters who fought valiantly for our independence. While many selflessly sacrificed their lives to protect the dignity of their motherland, others got injured and embraced imprisonment. Let us remember one such Krantikari who dedicated his life to India's freedom. Nana Patil, famously known as Kranti Singha, was a freedom fighter of India. Kranti Singha Nana Patil was born in 1900 in Sangli region of Maharashtra and was a source of inspiration for the people. He was a political activist and the leader of the freedom movement in Maharashtra, mainly in Satara and Sangli region. He was involved in the independence struggle since the 1930 civil disobedience movement. He tried to educate the people of the rural areas to be aware of slavery, hence making the people courageous and brave. He gave motivational speeches to the people in their language to inspire them. Many social activities were being undertaken under his leadership for market administration, supply of food, establishment of judicial courts to resolve dispute, the dacoits exploiting lenders, and rigorous punishment to the students. Kranti Singha Nana Patil established a military force named Tufan Sena. He proudly executed the technique of attacking British trains and other services.
he was influenced by other great freedom fighters like Mahatma Phule's Satyashodha ideas and the great work of Rajashri Shahu. He tried to make Gandhi-Nevar marriage arrangements at a very low cost, as well as help spread the importance of education, establish libraries, and eradicate superstitions. Kranti Singh Nana Patil always spoke against the caste system. He also fought for the rights of the farmers and workers. Kranti Singh Nana Patil believed that a system of government should be set parallel to the British rule with the concept of taking care of our own country. Kranti Singh Nana Patil thus established a parallel government in the district of Satara in 1942, popularly called as Patri Sarkar or Prati Sarkar, in order to suppress the British rule. After the country got independence, Kranti Singh Nana Patil also took part in the United Maharashtra movement. He was the first member of parliament to address the parliament in Marathi. On this special occasion, let us remember our heroes like Kranti Singh Nana Patil and what important role they played in the fight for independence. It was freedom fighters like him who encouraged other people to fight for the liberation of the country. Jai Hind, Jai Maharashtra. धन्यवाद स्नेहा इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कॉलेज की तरफ से 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला था कोलाज मेकिंग कंपटीशन और इसका विषय था महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी। इस प्रतियोगिता के विजेता हैं फर्स्ट ईयर के अमन मौर्य और दूसरा कंपटीशन था एसे राइटिंग कंपटीशन, जिसका विषय था ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन द पास्ट 75 ईयर्स। इस प्रतियोगिता को जीता है थर्ड ईयर की प्रज्वली कुरहेकर ने। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप जब कॉलेज आएंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट कॉलेज से ले सकते हैं। ओवर टू यू अमृता। Good afternoon, everyone. At this moment, after we have seen two important things. One of the main important events that we spoke about was information about one of our Krantikari and a Povada which was sung by one of our students. I would like to take this moment to speak about a program that has been a flagship program of our government for the past few years. And this particular program is called Ek Bharat Shresth Bharat. Now, what is this program all about? It basically aims to enhance the cultural exchange between different states all across India, and to make sure this exchange is done really well and that people understand the different cultures of different states, learn the languages, know about the food culture, the dance culture, etc. This program has been utilized. And it is not just done at our level, at the college level, it is also done at the grassroots levels at different schools, starting from the first standard till the graduation level. Now, what is this program about? The main idea about this program is the way that the government utilizes or executes this program is by pairing different states. Now, one of the pairing that we have is between the state of Maharashtra and the state of Odisha. You would have seen there are certain posts that we have put up. There are activities that we have been doing from the past 2 years. And the information is, you would have seen that on our Instagram as well as the Facebook page. And some of you all would have participated in those programs in the past. Today, we are going to talk about how 2 different cultures, speaking about in the form of dance forms, can be amalgamated together. So taking that as an example, we are going to showcase a video which is going to show you 2 dance forms. One is a form from Maharashtra, which is called the Koli dance. And the second dance form is called Sambalpuri, which is a folk dance from Odisha. And 2 of our faculties from IIT Mumbai, Ms. Anvesha Patra and Ms. Anusha Ram, have participated, and they have made a video for the same. And without doing further ado, I'll just showcase that on over the screen. Give me a minute.
A minute till I open the screen. I'm sharing the screen. ढोल डोलतय वाऱ्याव बाय माझी ढोल डोलतय वाऱ्याव 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 রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী হে রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা গতি পদে কহলু কথা হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা গতি পদে কহলু কথা সপন রাজা সপন সপন রাজা সপন রানী তাকে সুতা মানে গেলা রঙ্গবতী রঙ্গবতী ढोल डोलतय वाऱ्याव बाय माझी ढोल डोलतय वाऱ्याव 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 Just to add some bits, thank you. First of all, a thank you to Anvesha and Anusha for performing the folk art so well. If you saw these the dance, there are certain steps that are very similar between the two dances, which is why we use that to showcase that culturally we are quite similar as different states. Even though we are different states, we are still the same. And thank you to both of them to showcase that so beautifully. And speaking about the other thing is we would like to thank you for all of you for taking out your time and attending this session that we have planned for you. Now, this is not the only session today. We have also have one more session which is planned for tomorrow. Tomorrow being the National Tourism Day for India, and it is planned. It falls on the 25th of Jan as planned by the government. And we also have a nice program planned for tomorrow. The link for the same has already been given to you all. In case it's not given, I'm sure you can, your WhatsApp or group or your classroom. And I would like to thank all of you all for attending this and making this one day event successful. And we are looking forward to see you again tomorrow. Have a nice day. धन्यवाद.